Hello, dear viewers, dear friends, welcome to my YouTube channel वानी बत्रा। आई होप मुझे उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे, आप भी मज़े से होंगे और आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लेक्चर और नॉलेज के साथ साथ यहाँ पर गपशप भी थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को गपशप बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि हर किसी को पसंद होता है गपशप करना, अच्छी अच्छी बातें करना और अच्छी अच्छी बातें पिलाना। तो जिस तरह की पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया था रीनल फंक्शनल टेस्ट, वो हमने स्टार्ट किए थे और उसमें हमने किडनी का फंक्शन, किडनी के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। फिर रीनल फंक्शनल टेस्ट स्टार्ट किए थे और उसमें जो हमारे पास सबसे पहला टेस्ट था रीनल फंक्शनल टेस्ट का, वो था एस्टिमेशन ऑफ ब्लड यूरिया। वो भी हमने उसका प्रिंसिपल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसका रीजेंट हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ रीजेंट एस्टिमेशन ऑफ ब्लड यूरिया का जो रिएजेंट है, उसके एस्टिमेशन के लिए जो रिएजेंट यूज़ होते हैं वो हम आपके साथ इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल वानी बत्रा को लाजमी से आपने सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर रिएजेंट की बात की जाए तो यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ होते हैं वो है एसिड रिएजेंट और स्टॉक ए फेरिक क्लोराइड FeCl3 6H2O और 2 gram plus 10 ml distilled water. Then we have to dissolve it and add 40 ml phosphoric acid and slowly add water to make 100 ml. Add reagent stock B concentration H2SO4 or 200 ml plus distilled water at 100 ml. Working acid reagent acid reagent A 0.5 ml plus acid reagent B 1000 ml. Color reagent stock A diacetyl monooxide 2% in water. Working color reagent stock color reagent A and B 67 ml each and water to 1000 ml. And then stock urea stand, prepare 1 gram percentage of urea in vinyl mercuric acetate, 4 milligram percent vinyl mercuric acetate containing a drop of H2SO4. Working standard dilute 3 ml of stock to 100 ml with vinyl mercuric acetate. The procedure for this test is we have to label 2 test tubes 18 multiplied by 150 and millimeter as T test and S standard. Then we have to add water for test 10 ml for standard 10 ml. Plasma or serum for test is 0.1 ml, but for standard it is not present. For standard working standard we have for test we have 0 standard working, and for standard we have 0.1 ml. Mix by repeated inversions. Then prepare another set of test tube T test as standard and B blank. Then we have to add water 1 ml to the test tube, 1 ml to the standard tube and 2 ml to the blank tube. Then we have to add diluted serum from above in the 1 ml and the test tube, while in the standard and blank tube we will not add some serum, diluted standard from above. Then diluted serum from above in the test tube is not allowed, while in the standard tube we will add 1 ml, while also in the blank tube we will do not add it. Working acid reagents, working color reagents. So working color reagents 2 ml are added to all of these tube, test tube, standard tube and blank tube, while working acid reagent is also added into all these tubes, 2 ml tube, 2 ml to the test tube, to the standard tube and to the blank tube. Then mix thoroughly and place the tube simultaneously in boiling water bath for 20 minutes. Cool the tubes and take OD at green
filter at a wavelength of 520 to 540 millimeter, setting 0 OD with distilled water. Then we have to calculate the result serum plasma urea in milligram percentage, which is equal to T minus B divided by standard minus blank multiplied by 30. Normal value of blood urea is 15 milligram to 45 milligram percentage. So the interpretation raised in perianal causes prolonged vomiting, excessive diarrhea and homeostasis. Renal cause is all forms of kidney disease. जो हमारे पास किडनी का कोई भी अगर इस तरह का डिजीज़ हो तो वो क्या कर सकता है, जो हमारे पास ब्लड यूरिया है उसका लेवल इंक्रीज़ कर सकता है. इसके अलावा पोस्ट रीनल काजेज़ भी हो सकते हैं. रीनल काजेज़ क्या पोस्ट भी हो सकता है, जिस तरह के एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, हमारे पास जो प्रोस्टेट का साइज़ होता है अगर वो ज़्यादा होता है, साइज़ में बढ़ जाता है. और स्टोन्स इन द यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक में स्टोन्स भी हो सकते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. इसके अलावा ट्यूमर ऑफ ब्लैडर, अगर ब्लैडर में कोई ट्यूमर रसूली वगैरह है तो वो भी हमारे पास ब्लड यूरिया की जो हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसको ज़्यादा कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है. इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा रीनल फंक्शनल टेस्ट है जो कि किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए और किडनी में प्रेजेंट कोई भी डिजीज़ को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो दूसरा टेस्ट हमारे पास है सीरम क्रिएटिनिन. क्रिएटिनिन एज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन इज़ अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिन, जो कि हमारे पास एक प्रोटीन होता है, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मसल में प्रेजेंट होता है. द प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिनिन डिपेंड्स ऑन मसल मास, जितने ज़्यादा मसल मास होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, क्रिएटिनिन प्रोडक्शन होगा. क्रिएटिनिन इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द किडनी, और यही क्रिएटिनिन फिर क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है मसल से ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में ये ट्रांसफ़र होता है और ब्लड स्ट्रीम से फिर क्या होता है, किडनी तक जाता है. द किडनीज फिल्टर आउट मोस्ट ऑफ द क्रिएटिनिन एंड डिस्पोज ऑफ इट इन द यूरिन. जो हमारे पास किडनीज है वो क्या करते हैं, वो जो हमारे पास क्रिएटिनिन है उसको फ़िल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद फिर क्रिएटिनिन को यूरिन से वो यूरिन में क्या करते हैं, एक्सपेल करते हैं, वो बाहर डिस्पोज करते हैं. इसके अलावा अगर वैल्यू ऑफ की हम बात करें, द सीरम क्रिएटिनिन लेवल प्रोवाइड्स more sensitive test of kidney function than blood urea, because kidney impairment is almost the only cause of high level of creatinine. The principle of the serum creatinine test is creatinine reacts with picric acid in an alkaline medium. The absorption of the yellow color produced is measured in a colorimeter using a blue-green filter or in a spectrophotometer at 490 nanometer wavelength. तो यहाँ पर हम ये भी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर रिएजेंट की बात करें तो द कमर्शियल किट कंटेन्स picric acid with surfactant plus sodium hydroxide, standard 2 milligram per deciliter, 177 micromole per liter. The working reagent is formed by mixing equal volumes of picric acid and sodium hydroxide solution which is stable for 3 days at room temperature. So dear friends, dear viewers, this was our today video. हमारी आज की वीडियो थी. आगे हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल वानी बत्रा को लाजमी सब्सक्राइब करें, और ये जो सीरम क्रिएटिनिन के टेस्ट का जो प्रोसीजर है इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे. हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.